While you can start. Okay. इथून बंद करता येईल ना आपल्याला. Just a second. I'll just a second. Please give me one more minute. I hope my screen is visible now. Yes, Payal. Okay. Okay, so here we go. So good afternoon and welcome to the session on Blender for Animate. And I am Payal Mukherjee. I am a senior project manager of FOSSEE, IIT Bombay, and I have joined with my colleague, Mr. Kushal Singh Rajput. And Kushal is actually leading the focal team of FOSSEE. So focal is into animation and graphic designing using 2D and 3D interfaces. So in this session, we'll talk about what is FOSSEE and why we are here. And then, I'm sorry, it is not Synpic Studio, it is Blender. Okay, so moving ahead. So let me first introduce FOSSEE. So FOSSEE is a project which is being developed at IIT Bombay. It's an acronym for Free and Open Source Software on Education. So earlier it was only for engineering education, but now it is open for all the streams of education, including animation, GIS, statistics, applied physics, mathematics, everything. Okay, and this word free does not only mean the free aspect as the free aspect as we mean in free of cost. Okay, so it is not only free of cost. This free word can be related to many other things. For example, you can download it for free of cost. It comes with licenses such as GPL and BSD, and you can use the FOSS or FLOSS for free. So that's why we call it free or liber. So this liber term is actually can be related to many more aspects, as I said. So one is you can download it for free. The other one, you can modify the code for free. You can distribute it for free, and you can also distribute the modified version of the software, everything for free. So here is why we call it free and open source software or free liber open source software. Okay, so here is the explanation of the term FLOSS. And FOSSEE is a part of the NME ICT, which is the National Mission on Education through ICT. So FOSSEE, the vision of the FOSSEE project is to impart training as on hands-on training, not only the theory part, but also the application part, so that the students are empowered or the learners are empowered with the practical knowledge of the software, and that can be applied to generate an output in terms of a completed animation, in terms of a circuit simulation, in terms of a flow sheeting, in terms of a case study. So we have different ways in which the learners can contribute. Okay. And we are funded by the Ministry of Education, Government of India, and this project is of national importance. And that is why it was introduced in the year of 2009, and still we are on. Okay. So our vision is, skill-based education and upliftment of all the, Indians. As I always say, not only students, FOSSEE is also, partnering with the academicians as well as industry professionals. You can see all the tiles here. So this is the list of software that comes under the FOSSEE umbrella. So we are into training of all these software. We also develop some of the software such as eSIM and some cloud versions of other software. So eSIM is actually a software which is developed by the FOSSEE team, and it is for the electronics and electrical section of engineering and many other branches as well.
So Python, Scilab, etc. You all know. I mean, whoever are from engineering background, they will know the applications of Python and Scilab. So we are into steel industry through OSDAG, DWSIM, and Open Modelica for chemical engineering. R is for statistics, GIS, QGIS is for the GIS vertical mapping and all. So in this table, you can just see the comparison because all this software, they're actually open source alternative of many popular commercial software. For example, MATLAB, you have already, I think all of us have learned heard the name of MATLAB. So Scilab is the open source alternative for MATLAB. Okay, similarly for R, for eSIM, for OpenFOAM. OpenFOAM is a software for computational fluid dynamics used by mechanical, chemical, aerospace engineering, and so on. So this is a list of all the software that FOSSEE supports and the commercial alternative of the software. For animations, specifically, we have Synfig Studio and Blender. Synfig Studio is an open source alternative for Adobe After Effects, Flash, etc. For 3D Max, Maya, which are very popular software for 3D animation, we have Blender. Okay. Okay, so here are all the projects in which the students can be involved. For the focal vertical of FOSSEE, mainly the students can be involved in summer fellowship, and also throughout the year they can work with a team for development of animation in 2D as well as 3D versions. So with that, I'll stop sharing my presentation, and I will request Kushal to please take it over from here, and you can start your demonstration. Over to you, Kushal. Hello, Yes, yes. am I audible? Yes, you're audible. Yes, okay. So let me share my screen. So I think screen is visible, right? Hello? Yes, Kushal. Yes, Kushal. Yes, so I am sharing one screen. This is our ANIMATE 2025. So here we are FOSSEE IIT Bombay present this animation hackathon. So this hackathon is only for the encouraging the students to use open source software for animation, to build a animation. So we have two kind of themes are here. So this is our theme navigation button. So here you can see the people who want to create their animation in Blender 3D. So they can choose the three subject. First is a futuristic cityscape. Second one is a mythical creatures and mechanical marvels. Okay. So for the 2D, there are three different themes are there, and for 3D, these three different. So previously we showed 2D animation, how to submit a 2D animation. So today we are going to show you a little demo how to submit our 3D animation for this hackathon. So you have to send all the proper files so that we can evaluate. So how to do that? Practically, I will tell you one by one. So suppose this time my name is Kushal and I have suppose 4 members in my team. So I am a team leader. So what you have to do? You have to choose first theme. So for example, I am choosing this mechanical marvel subject, and I will try to create a mechanical marvel 3D animation, a little demo in this time. So let me minimize this. So on this desktop, I will create first one folder. So I will rename this folder team Kushal. Okay. So this is one of the folder which I created. Now you see this is a blank folder. In this folder you have to kept all your files, and that folder you have to share to me in contact-focal@fossee.in. So this is a blank folder. So here I selected that theme. So now I will create a story for that first. So let me create one story new
text document I will create, and this is my story. Okay, so in this story, in this blank document, I will write my story. So before writing my story, I will write it here, team leader. And my then team members 1, 2, 3 and 4. Okay. Okay. So after that what I will do, I will create my story. So here you put down your story, and my story category is let me check. So mechanical marvels. So here I will write 1, 2, 3, 4 paragraphs about the story which I am showing. So this is just a demo, so I can't write whole the story for time saving. So suppose these are my 4 paragraphs. So 4 paragraph story I created here, and save that file. So I am saving that. So now you see, now in my folder story is there. After so this is the story. So after that what I will do, I will create a storyboard. For that storyboard, I will use Inkscape software or any other software. Otherwise, I can sketch my storyboard and I will keep it here. That also. So if you do not want to create a storyboard, that will also okay, because you have storyboard in your mind. Okay. So after that, story and storyboard is there. Suppose one script. Storyboard you also placed here. So now I want to collect some models, images, or any kind of artworks I want to create, which is for that I will use open source software to create artwork, and that also I will keep it here. Suppose this time I want to collect one model. So this is a source, focal.fossee.in. This is one of the website which is created by us, our team, and here are the this is a library for the Blender. You can click it here. You can see there is a library for the Blender. You can download the models from here and use it for your animation. So page number 1, these are the models. You can click it here. You can see many more. In this way you can see. I will click here. I want to use a traffic model pack. So because of I selected this storyline for mechanical marvel, I want to download this. So I click it here. Now you can see there is one download Blender editable file. So I will click this. So now you see one blend file will be downloaded. So who created these? These files are created by the students, and it is uploaded here for use of community. So this is free and open source models. So you can use this also, or you can go to the Google, search it here, free
Now you see, this is one of the website. So now from here also you can download the models and use. So suppose I will check this. This is for free. So click it here and download. Click it here. So now in this way you can collect your models, or you can create your models in Blender too. Okay, if you have expertise in Blender, you can create a model also. So let me check. So now you see in my download folder, this traffic model pack and Mercedes Benz I downloaded. So I will copy that and I will put it in my folder. So now, and I will extract it, this also. Okay. So these are my resources to creating my animation. After that, what I will do, I will now one more I want to tell you from where you can learn these softwares. So here in resources, you can see there is a self-learn Blender and Synfig Studio using spoken tutorials. So click it here. You can see this is our spoken tutorial. And if you want to learn Synfig Studio, select the Synfig Studio and select the language whichever you want. So there are 22 languages maybe. I will select English and click it here. So now you see there are 15 tutorials. So you watch 12 tutorials, you watch one by one and learn Synfig Studio. In this way, if you want to learn basic of Blender, then you choose Blender and click it here. Now you see there is tutorials, 9 tutorials are that. To learn this software for basic, you can watch this tutorial and learn yourself. So there are many resources also. You can use YouTube, or you go the Blender Studio website, and from that also you learn the Blender, and you can learn how to create a story from these two tutorials. This is for writing your script and storytelling. Use this link. So you see here communication series. You search it. You will see there are 4 tutorials are there. You watch them, so you can comes to know how to create your story, how to write your story in PAR format: problem, action, and result. So by watching this tutorial, you comes to know how to generate your script and story, and then you can go for the animation. So now after learning and watching some resources, you can create your animation. So here we already collected story. I write story, I created storyboard, then I downloaded some models, free models from open source models, and this is my Blender which I installed here, that I will open. Okay, this is a Blender. So now you know already basic how to use Blender and how to create a models in the Blender. So for time saving, you can download the models, free and open source models, and use it. So let me open that model which I already downloaded. So maybe I open that also and open. So now you see this is a model which I downloaded from focal.fossee.in. So this is my car, and my storyline was mechanical marvel. So what I want to do, my car is running and suddenly it goes to fly, and after that again
by crossing the signal, that car will run as usual. So this is my theme. This is one of the scene of my story. Okay. So for that I am making a animation in this. For that scene, I will create one animation here in Blender. So how to do that? I will give you a small demo. Okay. So I will select now here animation mode. So when I here in animation mode, you can see there are too many window panels are there. I will close this window panel, which is not necessary for me. So let me right click it here and close this area. So now I have only two window panels are there, main window panel, and here are the property panel and hierarchy panel is there. So I can move them by holding the borders. So let me click this area and press a zoom, 0. So this is my scene camera. I can camera scene is this. So let me close this camera view, click it here, and I will click on view and I will lock my camera view. So I locked my camera view. Now I will create for my scene, I am putting the camera in the proper place. So let me zoom little. Let me move this side. Let me rotate. Let me move up. Yes. And let me zoom. So at the first for creating scene, I placed my camera here. Now let me move my car at right side. So for that, what I will do, I will select the car model. This is my car model. So you see here in the collection panel, there is a cube. That means this is a top part of the panel car, and these are the wheels. So I will make them in link them. So for that I will select the tire, press shift button and move it here. So now they are child of this car shape. Yes. Now you can see when I click hide, this car collection. So this car is now grouped. Now here in items, I will check. You can see my whole car is moving front and back. So for this time, I will move my car at this side. So this is my first keyframe. First keyframe at a 0 timeline. On the timeline, you can see this is a time cursor at a 0 frame. So I want to create here one keyframe. So for that, click it here on X, right click here and insert a keyframe. So now you can see there are three keyframes, XYZ keyframes are there, and my car is at this point. Now at 20th frame, I will move my car a little bit here. So on X direction, I will move car this way up to here. Now I will right click here and once again I will insert keyframe. So now I have a two keyframes, 0 and 18 at 18. So now you can see, I will show you. So my car is moved from 0 to here. Now at this point, I want to move my car, I want to fly this car. So in the Z direction, my car will fly like this. I will insert a keyframe. So my car is now flying. Now it will cross the signal. So at the 40th frame, let me zoom little.
and my car will cross the signal like this, and I will insert a keyframe. Okay. Let me move camera here. Now at the 48, my car will touch to the ground now again. So again, I want to move it down and here, and I will insert this keyframe. That's all. And at the 80 frame, my move car at this point, and I will insert keyframe. Now let me check what happens. So at 0 frame, I will play the animation. Yes. So while crossing the signal, my car will fly. And after crossing the signal, my car once again goes as usual. So this kind of scene I created here. So I have to render it, and one scene I created. So in this way, we have to create too many scenes, 1, 2, 3, 4, whichever is related to my story, and then we have to combine them in Blender video editor. You use Blender video editor, or you can use other open source softwares also, like OpenShot editor. Let me show you. Let me render this first. So let me once again check. Okay. So while rendering, my camera is steady here. So I can change my camera settings also. So for the first 0 to 20, my camera would be at close view to the car. So what should I do for that? So I will click it here, and in the view menu, at the camera, select the camera, and in the camera property, this is the view, and location I am changing. These are my setting for the up to 20 frame. After that, I want to change the setting till 40. This time my camera moves like this. This much. So here once again I will insert a keyframe, and at the 80, yes, so my camera setting is this. Now I will insert a keyframe here. So let me check my
animation. Yes. So in this way, I created an animation for particular scene which I have in my story. Okay, so I have to render this, and you have to chunk your stories scene like this and combine them and send it to me. But now this file you have to save. Now you see in the team Kushal folder, you given me this blend file scene. So let me change the name. Let me first rename this file, save as. Scene. Suppose my scene was 4. This scene was fourth scene. So now you can see scene 4 blender file is there. So in this way, suppose in my storyboard, I write up a story and I have a 10 scene in my storyboard. So scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. In this way, 10 scenes will be there. So I will copy, paste. I will rename, suppose this is my scene 1. So in this way, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 up to scene 10. If I required scene 10 in my story, so I have to send scene 10. And then the final video, which is combined video. So let me close this file first. Quit. So I created a scene. I have a models which is I downloaded. This is a model which I downloaded. Okay. And also suppose there are music or any narration, you record it and you place it here. Now I want to combine the scene. So this is Blender. So for editing your scenes, you have to go here and video editing, click it here. So now you are in the video editing mode of the Blender. So one by one, you have to import your scene, import your narration, import your images if you needed in between the scene, like a title or something subtitle, and put it here and combine them and render a final video. So let me import one scene here, add scene, new scene. Okay, this is one of the scene which I created newly, and just we created that scene on our desktops. So let me import that also. Suppose this is scene 1.
Where is desktop? eStudio, desktop, and the folder is Team Kushal. And in this team folder, okay, I have to create first, render first as a clip. Then I can import. Okay. So let me, this is a scene 1, and I have to render this file. So for that, I have to select some, this is a setting of my output, and this is a rendering. I will render it 50%, suppose, to save a time, and 80 is my end frame. Output is at desktop. Here in Team Kushal, this is my output. Okay, and FFmpeg video. Yeah, setting is done. Now I have to render the animation. So if I click here for render the animation, it will take a time, and it will give a MP4 or AVI output. So for time being, what I will do, I will play my video, and I will take a screen play, screen recording. So let me do that. Now I am taking a print screen video, and this much area I will take. I will start and play my video. Start one. Yes, done. And now saving. I am saving this clip in the desktop, my folder, and scene 4. Now see, here in my folder, I have a scene 4, scene 1, scene 3, like this Blender file also, and the output of each scene. So let me play this scene. Yes. This is my screen recording. You don't have to do screen recording. You have to render it. For a time being, I did this. Okay. So this is my scene. Now, when you are coming to the editing, so suppose you are doing a video editing, that time you import that file. So let me go to the desktop. Here, Team Kushal. Now you see this is a scene 4. So this scene 4, I can download it, import it here. And now you can combine the scenes here one by one. Suppose this is a scene 4, and after that this is a second scene, then one more scene. So in this way, I have too many scenes. And combine all these scenes, and then you have to render final video. Okay, again
Again, you have to render from here for the final video. So in this way, that final video also you have to put it here. So let me show. So now you see in this folder, I kept all the Blender scene files. I created output of the scene, and then I will edit it in the Blender video, and final video is also there with my story, script board, and downloaded models also are there. So this folder you have to share to me, because when you are sharing only the final video, I can't evaluate, because I have to check your scene, your imported models, and I have to comes to know that our team comes to know that you are created these in Blender. Okay, or if you use any images, so you have to send that source files also. Suppose you created any background in Inkscape, then you send that Inkscape file also and your output of that Inkscape file. So now I will show you how to upload this folder to your Google Drive. So let me open one Google Drive. So this is my Gmail. So in this way, the team leader who are sharing his folder. So go to Google Drive, click on my drive, and upload a folder. Folder upload. So here on desktop, this is the Team Kushal folder. So I select this and uploading. So now you see here, Team Kushal folder is uploading. Let it be upload. So there are 14 files in my folder. So all files you have to send to me. So our team will evaluate all your files and comes to know that you are created your storyboard, or your imported models and Blender files, and after the scene of the Blenders each, and the final video also we will get your audio narration, all you have to put it here. So now you see the Team Kushal folder is created and I will get all your files. So in this way you have to properly send your files so that we can evaluate. If otherwise, if you miss something here, our team will call you and we can contact you and ask you the missing files. So you have to provide the missing files. We will collect all these and set of all your files. Then we considered you are sending a proper submission. Okay, so let me
where you have to send. So you have to send it focal dash foci, sorry, you have to send contact dash focal @foci.in. To this mail, you have to send that link of the folder. So this is my drive, this is my folder, and you have to share, copy the link, and that link you have to send to on that mail. Here, this is my link. I will send this on contact dash focal @foci.in. Okay. In this way, you have to submit your animation. So if you have any questions, then ask me. We will try to answer you. Let me stop my sharing. Hello. Hello. If you have any questions or any queries, ask me. Hello, am I audible? So can you ask me, Anand Ankash Kumar, what is your problem? You can speak. Unmute yourself and you can talk. Hello. Hello, sir. I'm audible. हाँ, Ankan Kumar. Yes, tell me. सर हम कुछ नहीं समझ पाए सर इसमें. अच्छा, आपको क्या करना है, आप ब्लेंडर फाइल का अगर एनिमेशन बना रहे हो तो आप एक Yes, sir. फोल्डर बनाना है आपको, और उस फोल्डर के अंदर आप आपका टीम मेंबर स्टोरी जो है आपकी, वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको लिखनी है, और Yes, sir. उसके बाद आपको ब्लेंडर यूज करके एनिमेशन क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. मतलब सपोज जो भी आपकी स्टोरी है, जो आपने कैटेगरी चुनी है, तो ब्लेंडर Yes. में एक्चुअली 3 सब्जेक्ट है वहाँ पे. मैकेनिकल मार्वल्स है और 2 दूसरे सब्जेक्ट है. लेट मी चेक. Mythological animals. यस, यस. सो ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनो, उसके ऊपर आप एक स्टोरी बनाओ, और स्टोरी के अनुसार आपको ब्लेंडर में एनिमेशन क्रिएट करना है. और एनिमेशन क्रिएट करते वक्त अगर आपको मॉडल्स की ज़रूरत है, तो आप फ्री एंड ओपन सोर्स मॉडल गूगल से डाउनलोड करो. और मैंने आपको सोर्सेस दिए हैं. focal.fossy.in, ये एक सोर्स है जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने ब्लेंडर 3D में मॉडल्स क्रिएट करके अपलोड किए हुए हैं. तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है. अगर आप मॉडल्स बनाना नहीं चाहते हैं तो, और वहाँ से यूज़ करके उस मॉडल्स को आप अपने एनिमेशन में यूज़ करके आप आपकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन पूरा क्रिएट कर सकते हो, और हमको सेंड करो. और जब भी आप सेंड करोगे तो आपका ब्लेंडर फाइल साथ में होना चाहिए, आपके सीन जो आप क्रिएट किए वो सारे साथ में होनी चाहिए, ताकि हम उसको इवेलुएट कर सकें. So can you please repeat आपने जो बोला फोकल करके कुछ? यस, यस. तो मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ. ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर की हुई दिखाई दे रही है? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये जो एनिमेट वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, रिसोर्सेस. इस रिसोर्सेस में आपको सीखने के लिए लिंक दी हुई है, और सिनफिक स्टूडियो इंस्टॉल करना है उसकी भी लिंक दी हुई है, ब्लेंडर इंस्टॉल करना है उसकी भी लिंक दी हुई है.
और स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है वो अगर सीखना है तो यहाँ पे एक लिंक है कम्युनिकेशन स्पोकन ट्यूटोरियल, ये भी लिंक है। और आपको यहाँ पे एक वेबसाइट है, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, रेफर ग्राफिक्स फ्रॉम फोकल फ्री एंड ओपन सोर्स कैटेगरी क्रिएटिव आर्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये focal.fossee.in नाम का एक वेबसाइट आपका ओपन होगा। focal.fossee.in, ये वाला वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, ओपन होगा। इसको मैं आपके चैट पे सेंड करता हूँ। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट से आप मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे ब्लेंडर में जाओगे तो यहाँ ब्लेंडर की रिपोजिटरी है। अभी सपोज आपको ये मॉडल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करना है। सपोज इसको क्लिक किया आपने, अभी आपको कोई एक मॉडल यहाँ से डाउनलोड करना है, जैसे मैंने डाउनलोड किया था। सपोज ये स्मॉल सिटी है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा डाउनलोड ब्लेंडर एडिटेबल फाइल्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड हो जाएगा ये वाला फाइल, ये वन सिटी ब्लेंड फाइल, तो ये ब्लेंडर का फाइल है। ये आप अपने ब्लेंडर के लिए यूज कर सकते हो। अभी सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो ये सिटी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है किसी स्टूडेंट ने, तो ये आपको यहाँ मिल गया। अभी आप इसको यूज करके आपका जो भी एनिमेशन का स्टोरी है उसके अनुसार यहाँ पे उसका आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यस। या तो आप गूगल में चले जाओ, यहाँ गूगल में जाइए, एक मिनट, यहाँ पे आप टाइप करो फ्री एंड ओपन सोर्स 3D ब्लेंडर मॉडल्स, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई देगी, ये वाली ब्लेंडर फ्री 3D मॉडल्स, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या ये भी एक वेबसाइट है ब्लेंडर द 3D एंड ओपन सोर्स 3D क्रिएशन सॉफ्टवेयर, यहाँ से भी आप कुछ मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एक वेबसाइट है ब्लेंडर क्रिएट 3D एसेट, यहाँ से भी आप फ्री एंड ओपन सोर्स 3D मॉडल्स डाउन कर सकते हो जो आपको यूज कर सकोगे आप। जैसे यहाँ पे अभी सपोज आपको ये वाला फिगर चाहिए, बेस कैरेक्टर रिग किया हुआ कैरेक्टर आपको मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करो, यूज करो। सपोज आपको आपके स्टोरी में ट्रीज यूज करने हैं तो ये वाला एक है रियलिस्टिक ट्री सीन, तो ये आप डाउनलोड करो, आपका सीन क्रिएट कर सकते हो। अगर सपोज आपने माइथोलॉजिकल क्रिएचर का कुछ करना चाहते हो तो ये देखिए, यहाँ पे कोई ड्रैगन डाउनलोड कर सकते हो आप, उसको चेंज करके आप मॉडल चेंज करके यूज कर सकते हो। ये हॉर्स है, वुल्फ है। सो ये वाले मॉडल्स आप डाउनलोड करो और इसको यूज करो, आपका स्टोरी क्रिएट करो और सेंड करो। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, और कुछ? और आपको कैसे भेजना है वो आपको पता है? ये पूरा पूरा फोल्डर मुझे चाहिए, सिर्फ आपका आउटपुट नहीं चाहिए। इस पूरे फोल्डर में देखिए, यहाँ पे आपने जो मॉडल डाउनलोड की है वो भी यहीं चाहिए, आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ चाहिए, और आपने उन मॉडल को लेकर के जो स्टोरी बनाई है, छोटे छोटे सीन बना करके आपने एक पूरा फाइनल वीडियो बनाया है, वो वाला भी रिसोर्स हमको यहाँ पे चाहिए, ताकि हम उसको देख सके कि आपने हाँ सही में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करके एक स्टोरी बनाई है और एनिमेशन बना के हमको सबमिट किया है। अंडरस्टैंड? समझा आपको? यस सर। uh, Sir, I registered 3D animation, but I animate the 2D animation if it is considered for an yes, ये
कार्तिक केएन ने पूछा है कि आपने रजिस्टर किया था 3D एनिमेशन के लिए मगर आपने 2D भेजा, तो नो प्रॉब्लम, वो आपका 2D कैटेगरी में ही काउंट होगा और 2D कैटेगरी के अनुसार उसको डील किया जाएगा, ठीक है। और भेजा है ओके। और किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो आप, क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम है 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त तक आप सेंड कर सकते हो एनिमेशन अपना सबमिशंस। और इस बीच आपको अगर कुछ भी पूछना है तो फोकल डैश कॉन्टैक्ट डैश फोकल @fossee.in पे पूछो आपका क्वेरीज, उसका आंसर हम देंगे। और हमारी टीम है, वो टीम भी आपको कांटेक्ट करेगी अगर सपोज कोई आपका फाइल मिसिंग है तो हम आपसे मांगेंगे वो आप फाइल हमको भेज देना ताकि हम आपके फोल्डर में वो रख करके उस सबमिशन को कंप्लीट कर सकें। अनकंप्लीट सबमिशन मत भेजना। एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Hello. Am I audible? यस यस। Yes. मैंने एक्चुअली ब्लेंडर किट यूज किया था, तो ब्लेंडर किट डायरेक्टली मॉडल्स आपके सीन में डाउनलोड करता है। हाँ तो उसके उसके मैं फाइल्स कहाँ से दूँ, या फिर बस ब्लेंडर की फाइल मैं आपको भेज दूँ हाँ, ब्लेंडर की मेरे फाइल फोल्डर से? आप भेज देना, ब्लेंडर की फाइल भेज देना जिसमें आपने मॉडल डाउनलोड किए हुए हैं ना, उसका ओके सोर्स, ओके ओके। उसका सोर्स जो है आप अपनी जो स्टोरी लिखे हो उसमें जी। उस सोर्स का लिंक भेज देना, ओके ओके तो हम उस लिंक को ओके। चेक थैंक कर सके कि ये 3D फाइल आपका ओपन एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सोर्स है, ठीक है। यू। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। सर, वन मोर क्वेश्चन, इफ यू मे। हाँ, ये जो आप बता रहे थे कि 10 सीन्स करने, तो ये सिंगल सीन होगा तो नो प्रॉब्लम है, या फिर मुझे सीन्स डिवाइड करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, वो तो डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन ना, कि हाँ, सपोज पर्सनल अभी, प्रेफरेंस है। हाँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्लो है, छोटा है, जी जी। तो मैं तो सीन चंक करके भेजूंगा और बाद में उसको कंबाइन करूंगा। डेफिनेटली एक ही सीन अगर मेरा 3 मिनट का होगा तो रेंडरिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। और डेफिनेटली डेफिनेटली। मैक्स आपका 3 मिनट होना चाहिए एनिमेशन जो भी है, 3 मिनट से ऊपर मत करना, बिलो दी 3 मिनट दैट विल बी ओके। ओके। और साथ में आप उस फोल्डर में आपका नरेशन अगर कुछ होगा तो नरेशन वाला ऑडियो फाइल और म्यूजिक जो भी ओपन सोर्स होगा, जो भी आप यूज करोगे उसका उसका सोर्स भेज देना ताकि वो कॉपीराइट ना हो। जो अभी सपोज किसी म्यूजिक आपने यूज किया है तो वो भी वो वाला यूज करो, जैसे यूट्यूब स्टूडियो से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, बट किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करना अवॉइड करो। ओके सर, थैंक यू। ये हमारा जो फोकल टीम है, फॉसी टीम है, वो क्या करेगा, आप जो जो एनिमेशंस भेजोगे, जो फाइल्स हमको मिलेगी हम उसको इवेलुएट करेंगे कि सारे फाइल्स आ चुके हैं, सारे फाइल ओपन सोर्स है और प्रॉपर आपने भेजे हैं, कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है, कुछ तो मिसिंग नहीं है, वो हम चेकआउट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेज होगा इवेल्युएशन का। आफ्टर दैट ये सारे जो आपके एनिमेशंस है वो जजेस चेक करेंगे। जजेस हमारे आईडीसी के जजेस होंगे और विस्लिंग वुड के जजेस होंगे, और जो एक हमारा पार्टनर है, नॉलेज पार्टनर, वेबसाइट में आप देखोगे तो वो वहाँ से जजेस आपके एनिमेशन को रैंक दे करके उसका विनर्स और ये प्राइज मनी वगैरह रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और वो रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। और आपको हो सकता है आफ्टर 15 डेज हमारा आपका इवेल्युएशन सबमिशन होने के बाद 15 डेज हमको लगेंगे इवेल्युएट करने को, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे ऑन द वेबसाइट, सो यू हैव टू चेक देयर। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर।
और आप लर्निंग के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल यूज कर सकते हो, बेसिक लर्निंग के लिए, और यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर्स के ट्यूटोरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं गूगल पे, वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पोकन यूज करना है। यू कैन सर्च यूर सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम गूगल एंड यू कैन लर्न सॉफ्टवेयर and do your animation and send it to us. This is the सर activity where we want कि आप कि कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीख करके अपना एनिमेशन, अपना स्टोरी, अपना जो भी आइडिया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप उसको ब्लेंडर यूज करके बनाओ और सेंड इट करो, ताकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रोपोगेट करने के लिए हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। यस हम्म, यस अंकन कुमार, टेल मी। हेलो, हेलो, आई कांट हियर यू। तो ठीक है, अभी और आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप ईमेल करना, हम उसका हेलो सर, वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ, टेल मी। सर आई एम यूजिंग ब्लेंडर एट फर्स्ट टाइम, सो सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको कि कैसे एनिमेट करना है, कुछ भी है फिर। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि यू गो इन स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल का वेबसाइट है, जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप बेसिक 9 ट्यूटोरियल्स है, 9 ट्यूटोरियल्स आप देख लो। 10 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल है, इसका मतलब 90 मिनट्स लगेंगे, 1-1.5 घंटे में आप ब्लेंडर का बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैसे एनिमेशन करना है। और ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, डाउनलोड करो मॉडल्स को, फ्री एंड ओपन सोर्स मॉडल को डाउनलोड करो, ब्लेंडर मॉडल को, और उनको एनिमेट करो, और आपका जो एनिमेशन का स्टोरी है उसको बना दो। तो ये सब सीखने के लिए आपको ब्लेंडर वीडियो एडिटर के भी ट्यूटोरियल स्पोकन ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है, ब्लेंडर के भी ट्यूटोरियल स्पोकन में अवेलेबल है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी जाके देख सकते हो उसको। तो वो सर लिंक, मैंने वो हाँ सर बोलिए। मैंने वो खोला था जिसमें सर वीडियो में मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं वीडियो। हाँ, तो आपको कौन सी लैंग्वेज में चूज करना है वो चूज करो। आप अगर हिंदी में चाहते हो हिंदी सेलेक्ट करो, हिंदी में वो उसका आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। सर आपने बोला था कि रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट अगर आता है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हाँ रिजल्ट आ चुका है। हाँ, तो रिजल्ट कब आएगा, जब आप एनिमेशन सबमिट करोगे। अभी सबमिशन क्लोज हो जाएंगे 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद कोई सबमिशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद इवेल्यूएशन स्टार्ट होगा 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त से लेकर के अगले 15 दिन तक हम सारे जो सबमिशंस है उनको इवेलुएट करेंगे, टीम सारी हमारी। और उसमें से जो भी प्रॉपर सबमिशंस है और इलिजिबल सबमिशंस है, वो जजेस के राउंड के लिए भेज दिए जाएंगे, और जजेस उनको चेक करेंगे। जजेस उसकी क्रिएटिविटी और उसकी स्टोरी लाइन और उसका प्रेजेंटेशन चेक करेगी, और उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। और वो रिजल्ट उस वेबसाइट पे हम डिक्लेयर करेंगे। एनिमेट 2025 जो वेबसाइट आप देख रहे हो, उस पे वो डिक्लेयर करेंगे उस वक्त। और आप सबको एक मेल भी आएगा कि रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, नाउ यू कैन चेक द वेबसाइट। आपको ईमेल आएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके ईमेल में, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा। अंडरस्टैंड? इज दैट ओके?
सो अब अगर कोई किसी को क्वेश्चंस नहीं है अभी तो हम वाइंड अप करेंगे. मैडम. Hello, Payal, can we close the session? हेलो मैडम, सेशन एंड करना है तो आ जाओ ना ग्राउंड में. हेलो. हाँ. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. मीटिंग हो गई. सो hello. So now if you have any query, ask me through the mail. Okay. So we will wind up this session. Thank you for coming. Okay, bye. Thank you.